हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ नेहा And my name is Raju. आज हम बात करने वाले हैं NVC प्रोसेसिंग के बारे में। सो कंग्रेचुलेशंस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इट मीन्स आपका I-130 या तो अप्रूव हो चुका है या तो होने वाला है। सो हम डिटेल में बात करेंगे NVC प्रोसेसिंग का पूरा मीनिंग क्या है, कौन से फॉर्म्स यूज़ होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे एंड कितना टाइम लगेगा, दैट ऑल वी विल डिस्कस। Yes. Hi. So basically, now we are at the step to where the application is sent to the National Visa Center, also known as the NVC. This happens after your I-130 application that's basically managed by the USCIS is approved. So the I-130 being approved doesn't mean you got your visa. I-130 being approved means that the Immigration Department, the USCIS, determined that your marriage is valid and you can proceed towards visa application. So thankfully, this is the time when the longest wait is over. So now the wait time is much shorter than the I-130. So therefore, the NVC basically issues the visa. जो अभी तक USCIS की प्रोसेस थी, दैट्स लाइक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ USA। तो उनका काम है ये डिटर्मिन करना जो आपने स्पाउस पिटिशन अप्लाई किया है अपने स्पाउस के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, वो आपका वैलिड है या नहीं, विच मीन्स उसका जो फाउंडेशन है जो कि आपकी मैरिज है वो वैलिड है या नहीं। अभी तक उसका यही मतलब था, जो इतने मंथ्स तक या ईयर्स तक वेट किया है आपने, उसका बस इतना ही था। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपका केस हैंड ओवर कर देंगे NVC में। अब एक्चुअली जो वीज़ा इशू होगा एंड फर्दर जो ग्रीन कार्ड इशू होगा वो आपको NVC इशू करेगी। Yes. So basically, the visa and the green card, they basically are all handled by the NVC, and the NVC will take care of your case from now on. Yeah. So let's begin with the documents. Like always, we will discuss. हम discuss करेंगे petitioner के documents और spouse के documents. I mean, petitioner is also spouse, but let's just say spouse for the one who is immigrating. Yes. So you wanna start with petitioner documents? Yes. So basically, there's two things where the not DS260, I'm sorry. For the NVC application, there's two main forms that we have to fill out. One is the I-864. It's the affidavit of support. This is essentially the document that the petitioner, the person that's living in the U.S., will have, and that's bringing their spouse to the U.S. That person will have to fill out. The I-864 is essentially, it's a form that you fill out that tells you, or tells them rather. It just means that you're willing to sponsor. Yeah, so that tells them that that not only are you willing to sponsor, but you have the capability of sponsoring. Yeah, and for that, uske liye, so you'll provide proofs. Yes, so you'll provide proofs. So basically, you have to attach a few documents. So some of those documents include an IRS transcript, and that might seem like a very difficult thing to obtain, but it's actually not. IRS transcript basically means your summary of your tax return. You don't have to look at the state return, but only the federal return. That's important for the I-864. So that tax return is something that would be in the IRS website. So in order to get to that, you just have to create an account. You need your social security number, and it's something that takes like less than a few minutes to do. It's a very easy thing. Let us know if you have any questions. The other thing is basically, I personally attached a bunch of other documents that show that I do make enough income. So for instance, my last year's W-2 and my last 2 weeks of paychecks, I just included that. Include whatever you want, whatever you think would be best for the NVC to approve it. Prove your annual income to Exactly. be in a certain range. They have ranges for every state depending upon the expensive of the state. For example, California is an expensive state, so the minimum salary that you would be requiring an additional person other than yourself is a little bit higher than, for example, other states. So you go and check your state and look at what's the minimum salary required, and if you have more than that, then you just provide the proofs of that by your salary transcripts. Yes. Or like, Yes. And also speak in Hindi. I'll say that all in Hindi soon. Yeah. Okay. So yes, so that's one thing. And the other document is the DS260. The DS260 is the document that the spouse that's living outside of the US, that is supposed to immigrate to the US, that document they should fill out. That's a fairly easy document to fill out.
The only thing that's hard is the civil is the documents that you have to attach when you fill out a DS-260 application, because there's an application and then there's the attached documents that go along with the application. Those are the hard ones. So basically you need to, yeah, and we'll talk about them later. ओके सो अभी तक हम डिस्कस करेंगे पटिशनर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पटिशनर डॉक्यूमेंट्स में आपको एक फॉर्म चाहिए I-864, जो कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होता है, जिसमें जो पटिशनर है वो ये स्टेट करता है कि ही इज़ विलिंग टू स्पॉन्सर, जो आपका स्पाउस आ रहा है उसको स्पॉन्सर करने के लिए विलिंग है, और प्लस उसके लिए वो प्रूफ प्रोवाइड करेगा अपनी सैलरी के प्रूफ। सो इट कुड बी पे स्टब्स ऑफ पे चेक्स ऑफ लास्ट 1 ईयर एंड योर IRS फॉर्म। IRS फॉर्म को लेने के लिए आपको जो NVC वेबसाइट है उसमें जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होगे वहाँ पे IRS वेबसाइट का लिंक भी है। आई वुड सजेस्ट कि कहीं और वेबसाइट पे जाने से अच्छा है NVC के वेबसाइट पे जाके वहाँ उसके थ्रू आप अपना IRS ट्रांसक्रिप्ट निकालो, और उसके अलावा आपका जो W2 फॉर्म है आप वो भी अटैच कर सकते हो, राइट। ये तो हो गया पिटिशनर का। अब बात करते हैं स्पाउस के बारे में। स्पाउस को कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए? स्पाउस के लिए एक फॉर्म फिल करना है, इसका नाम है DS-260। DS-260 फॉर्म का मतलब है वो आपको आपकी हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, ऑल दोज डिटेल्स आपको फिल करनी है वहाँ। आपको DS-260 फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको ceac.state.gov से। जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सबसे पहले मैं उसकी बात करती हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपने I-1 रेडी के लिए भी किया होगा, वो आप अटैच करोगे। आपका पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है वो आप अटैच करोगे। आपको ये PDF फॉर्म है, वहाँ पे साइज़ के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो आपको साइज़ का भी देखना है। उसके अलावा आपको PCC फॉर्म चाहिए होगा। PCC मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे, और इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें आपको बस पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट PSK खोलना है। वहाँ पे एक ऑप्शन, 2-3 ऑप्शंस होती हैं, पासपोर्ट, नया पासपोर्ट इशू करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, और PCC के लिए। तो PCC वाला आपने क्लिक करना है, वो सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको आई थिंक आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको बस उसको जाना है, थोड़े दिन में, आई थिंक 1 वीक के अंदर आपका PCC आ जाएगा। आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी, तो वो आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद बस जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेने के लिए आपको जाना है, एंड दैट्स इट। और आपको आधार कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट, ये तो एक मतलब एक ID और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए होगा। Yes, so essentially the DS-260 is an application which would require a lot of civil documents. The first thing is the passport. So you should attach a copy of your passport along with it, and also there's the police clearance certificate. I think that's probably the one that would take a long time. Yeah. So it is suggested. Which is not even long, 1 week. Everything else is very easy. Yeah. PCC will take some time. Exactly. So, but even then, I would recommend you do the police clearance certificate. Only after your I-130 is approved, because it has validity period. I'm sure it's valid for 1 year at least, but it might be valid for 2 years after COVID, I think. Right. Yeah. So yeah, and then the website that you have to go to is passportsevakendra.com. I'm not sure it's .com, but I'm pretty sure it's Passport Seva Kendra. That's how they say it. It's pretty easy to find. Passport Seva Kendra website. And then in there, there's an option for you to get a police clearance certificate. You just have to fill out those details, and you'll get a call. And essentially, you can proceed that way. It sounds complicated, but it's a very simple process. It's very easy process actually. Yes. आपने अभी तक इतने डॉक्यूमेंट्स कर लिए हैं, तो ये PCC वाला तो बहुत इजी होगा अप्लाई करने के लिए। Yes. हाँ, और PCC के में एक चीज़ और बताना है मुझे, और ये 1 साल के लिए वैलिड होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस, या 2 years के लिए भी हो सकता है, वो आप करंट सिचुएशन में चेक कर सकते हो। सो एनीवेज PCC में आपको ये होगा, अगर आप किसी और कंट्री में भी कुछ टाइम के लिए रहे हो, मोर देन 6 months अगर आप किसी और कंट्री में रहे हो, तो आपको वहाँ से भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ही कंट्री में रहे हो तो बस आपको एक ही PCC लेना पड़ेगा।
प्लस एडिशनली अभी यहाँ पे आपको DS-260 में क्या करना होगा, जो एड्रेसेस हैं आप जितने भी आपने जहाँ पे स्टडी किया है, आपने जहाँ पे जॉब की है, वो सारे एड्रेस आपको क्रोनोलॉजी में फिल करने होंगे। क्रोनोलॉजी में आपको ऐसे फिल करना होगा, लेटेस्ट सबसे पहले, फिर पुराना सबसे पुराना, ऐसे करके अपने घर के अलावा जहाँ भी आप रहे हो, और इंक्लूडिंग आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सब इंक्लूड करके आपको सारे एड्रेस वहाँ पे देने होंगे। इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा जितना याद है, इतना एग्जैक्ट होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर प्रूव कर सकते हो कि इस टाइम लाइन में आप इस एरिया में रह रहे थे, उतना भी चलेगा उसमें। तो ये आपको एक चीज़ फिल करनी पड़ेगी। सो अगर आपके पास पुराने एड्रेसेस हैं, नंबर्स हैं, सो यू कैन कॉल पीपल एंड आस्क देयर एड्रेस। अगर आप भूल गए हो तो उनको फ़ोन करके आप एड्रेस पूछ सकते हो और वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। Right. So in the DS-260, actually before that, we talked about police clearance certificate. So one thing that she was saying was that if police clearance certificate would be required in whatever country, let's say India, but also if you're staying in a different country for more than 6 months, you would probably need you will need a police clearance certificate from that country also. And then also when you're filling out the DS-260 application, probably the longest part of it, the actual filling out of the application, will be when you have to talk about all your addresses for the last, I don't know, like 7 years or? Years, I think it's just like since your birth, wherever you are. Oh, yeah, maybe it was since your birth. Yeah. But anyway, so basically, they'll ask you to fill out all your addresses. You don't have to worry too much about that, in the sense it doesn't have to be exact, but however much you can remember, fill out that, because that's what they would probably need. अब ये होने के बाद आपने NVC में मान लो सबमिट कर दिया DS-260। अब NVC का काम है आपको वीज़ा इशू करना। उसके लिए वो क्या करेंगे, उनके पास USCIS से रिपोर्ट आ चुकी है कि दिस मैरिज इज़ वैलिड। अब उनका काम है वीज़ा इशू करना। अब वीज़ा इशू करने के लिए उनको खुद एक वेरिफिकेशन करनी होगी, विच वुड बी कि वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। सो उस इंटरव्यू में बस आपको NVC ये सबमिट करने के बाद, DS-260 सबमिट करने के बाद बस वेट करना है कि आपको एक इंटरव्यू डेट मिलेगी, विच विल बी लाइक विद इन 4 से 6 महीने के बीच में आपको के अंदर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। और इंटरव्यू की बात हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Yes. You have to say that in English. Sorry, what did one other important thing that I want to mention is that it's important to have all these documents in the NVC with consistent names this time, because they would probably reject the document, which is okay because the NVC gets back to you really fast, and you can also update it very fast. But the thing is, it's important to have your birth certificate be consistent, including your date of birth with the same date of birth as the one in your passport. All those things have to be consistent. You want your green card to have your first name as your name and then the last name as your spouse's name because you got married. Let's say that's the way you want it. It's also recommended that by the time you are at the NVC step, this is not really that important for the I-130, but at least for the NVC step. Sorry, I'm interrupting, but in case you have a surname since the beginning, which is your father's side surname, you do not need to update this. This was a question in last video too, since we talked about surname, so people might get confused like they need to update their surname as a spouse's surname. No, you don't need to. If you have a surname, you don't need to update it. You just need a surname. And in my case, I did not have a surname, and that's why I added his surname, because that was easier process than to add my parents. That's correct. But whether you don't have a surname and that's why you are adding your spouse's surname in this application, or if you just want to change your surname because you got married, whatever that is, it's recommended that by the time you get to the NVC step, you update your previous documents so that they match your current surname that you want to have. And the I-130 itself takes a long time. So while you're waiting for the I-130, like we mentioned in the previous video, try to get those updates as during that wait time. It gets plenty of time to get those things updated. Those things would not, like for instance, your Aadhaar card, your passport. I think those are the two main things. If you get those, then that's probably good enough. I mean, if you're living in India, you'd have like bank accounts and all, so I recommend getting those updated too. Yes. Anything you have associated important things, you should get all of them updated. That's correct. So it will be easier for you. That's correct.
So yeah, essentially that's my recommendation. And then afterwards, as she was saying, the NVC would basically approve of your documents and then schedule you for the interview that's closest to your location where you're at. So that's that. However, one piece of good news with this is that NVC acts very fast. So basically, let's say that you have submitted your application, submitted your documents. Within 2 weeks, the NVC would basically either approve them or reject them. But when they reject them, it'll tell you what they rejected and why they rejected. And it'll also ask you to resubmit with those particular changes. And then once you resubmit, again, within 2 weeks, they'll see the corrections and probably approve it then. NVC acts very fast, so you don't have to worry about, oh, they rejected, then it'll take much longer to update again. No, it's a very fast process. The longer process is the interview wait. Once they send your case to schedule you for the interview, they can, based on how long the wait times are for the interview in your particular location. For instance, we had our interview in Mumbai. That had like a 6-month backlog. That is probably something that will make you wait for a little longer. But that's about it. Yeah, so GS260 आपके कॉन्सुलर प्रोसेसिंग का फॉर्म है, which means आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर रहे हो साथ में. It's not just a simple visa, it's a immigrant visa. So इसकी कॉन्सुलर प्रोसेसिंग होती है, इसकी सिंपल एम्बेसी प्रोसेसिंग नहीं होगी. सो आई थिंक देयर इज ओनली वन कॉन्सुलेट इन इंडिया सो फार. आई थिंक सिर्फ मुंबई में ही कॉन्सुलर या जो जहाँ पे इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस होता है. हाँ, तो एक चीज़ बोलना मैं भूल गई थी, जैसे कि इन्होंने बोला इसमें जब आप NVC के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप GS260 के साथ अपने बाकी जो सिविल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें आपकी सारी डिटेल्स कंसिस्टेंट हो. आपके 4-5 सिविल डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपका जो GS260 होगा, आपकी डिटेल्स सेम होनी चाहिए. सो अगर सेम नहीं होती है तो दे विल वो आपको बोलेंगे अपडेट करने के लिए. सो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. NVC थोड़ा फास्ट है USCIS के कंपैरेटिवली, बहुत फास्ट है. सो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बट इन माई ओपिनियन आप पहले ही वो सारा कंसिस्टेंट करके दो ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना आए. Anything else? Nope, that's it for me and her. Okay. If you have, अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो comment down below and subscribe and like and share. Thank you for watching. Thank you. Bye. Bye.